हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर पूजा एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग सराउंडिंग एंड हाउ टू मेक योर सराउंडिंग हेल्दी। ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट सम एक्सरसाइजेज एंड बहुत सारी एक्टिविटी डाइट एंड सोचते हैं, राइट, एंड देन दे lack after 10 days or maybe 15 days, right? So somewhere they lack motivation to be fit, or someday they will party and the second day they will think that they will perform well, right? से अच्छे से motivated रह सको and अच्छा perform कर सको, even if there are 10 things to follow in your life, you can at least follow 3 to 4 things on a regular basis, right? For example 10 चीजें हैं and आप उसमें से अगर 4 या 2 या 3 या 5 अगर रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, तो फिर आपका जो प्रॉपर लाइफस्टाइल है या हेल्दी हैबिट्स है वो सस्टेन करेगी, राइट? बिकॉज हर दिन 100% करना तो पॉसिबल नहीं होता। इवन आई कांट डू 100% एवरी डे। सम डे आई एम 60, सम डे आई एम 100, सम डे आई एम 90, सम डे आई एम 0, राइट? सो that is how I am on my way to being fit or being mentally good, I would suggest, right? So yeah, so let's start with the video. This video is gonna be interesting because I'll be giving my thoughts and opinion in this. So do subscribe and like and share with your loved ones. And अगर आपको पसंद है तो आप कमेंट भी करो, what you can contribute to the society. Maybe someone will be reading your comment and maybe they will be helpful, right? And also, if someone is liking my video and they're commenting, I can provide them free health consultation in regards of their basic health and everything. If they want any suggestion, we can connect on a call as well, right? So yeah, that will be one of the perks of commenting on my video. Okay, so let's start with the part. Okay, so how do you wonder कि some people अपने surroundings को अच्छे maintain कर पाते हैं, ठीक है? And some people naturally healthy lifestyle जी रहे हैं। अब मुझे वो नहीं पता वो digitally जी रहे हैं या real life में जी रहे हैं, but कुछ people हैं जो maintain कर ले रहे हैं अपना healthy lifestyle, ठीक है? द आंसर जो है वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, वो उनकी सराउंडिंग है, उनका इन्वायरमेंट है, ठीक है? आपका इन्वायरमेंट कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपको हर डिसीजन लेने के लिए वो करते हैं, पुश करते हैं बेसिकली। ओके, हाँ, दैट हाउ व्हाट यू आर ईटिंग, हाउ मच एक्सरसाइज यू आर डूइंग, हाउ वेल यू आर शीटिंग, हाउ योर वेल योर मेंटल हेल्थ इज बेसिकली। ओके, सो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स होनी चाहिए दैट विल आपके इन्वायरमेंट में जो आपको सपोर्ट करे, मोटिवेट करे हेल्दी हैबिट्स या लाइफस्टाइल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ओके, सो इसमें हम जो फर्स्ट थिंग है वो हम इन्वायरमेंट का बात करेंगे, ठीक है? आप सोचो अगर आपका किचन, ठीक है, कुरकुरे, चिप्स, शुगरी ड्रिंक, बिस्किट एंड सबसे भरा हुआ है, राइट? मेरा तो कभी भरा नहीं रहता। आई जस्ट ओके, सॉरी, कट टू द पार्ट। सो अगर आप भरा हुआ है स्नैक्स से, ठीक है, तो आप वही खाओगे। जब आपको भूख लगेगा आप किचन में जाओगे, आपको वही दिखेगा, आप वही खाओगे, राइट? सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। सो इसमें हम कैसे करेक्शन करेंगे, राइट? करेक्शन पार्ट पे आती हूँ मैं फटाफट। सो इसमें हम कैसे करेक्शन करेंगे कि आप अपने किचन में ये सारी चीजें रखोगे ही नहीं, ठीक है? एंड इवन इफ यू बाइंग फॉर एग्जाम्पल, हम छोटे होते हैं, राइट? एंड देन वी आर चिप्स खाना है, कुरकुरे खाना है एंड एवरीथिंग व्हाट नॉट, राइट? बट देन व्हेन वी ग्रो, even I have money, I don't buy random chips, kurkure or anything like that, or maybe I don't blink it every day or anything like that, right? Once in a month is a different thing, but आपका विल पावर important रोल प्ले करेगा to avoid all these things, because nowadays everything is available just in a blink, right? So इसमें विल पावर अगेन कंट्रोल करता है। एंड फर्स्ट प्लेस पे आप ऐसी चीजें रखो ही मत। मतलब आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन दैट आई डोंट कीप सर्टेन एप्स इन माय फोन ओनली, आई वोंट कीप डोमिनोज और KFC और पिज्जा हट, एनीथिंग। मेरे फोन में ये एप्लीकेशन है ही नहीं, ना रहेंगे, ना वो नोटिफिकेशन भेजेंगे, ना मैं खोलूंगी, ना मैं ऑर्डर करूंगी। दिस इज हाउ आई कंट्रोल माई सेल्फ। ओके,
And the second part comes कि हाँ ठीक है unnecessarily money I'm wasting and then I'm eating the junk also. Example like even if you are eating outside food आप क्यों enjoy करते हो बाहर जाने के पर्पज से तो आप डेकोरम इंफ्रास्ट्रक्चर enjoy करो क्लीन पीपल सोसाइटी enjoy करो ना कि फूड enjoy करने के पर्पज से आप जाते हो. आई डोंट थिंक कि इंडिया में कहीं भी ऐसा कोई रेस्टोरेंट होगा जो डेली बेसिस पे रन कर रहा है एंड दे आर प्रोवाइडिंग हेल्दी फूड राइट. I don't think. And then billing is the another thing I would say, right? So let's come to the second part of our video, which is like keeping your home clean. This I have like mentioned in the like earlier of my video as well कि आपको अपना home environment clean रखना बहुत जरूरी है. अगर आप clean रखोगे डस्ट नहीं रहेगा एलर्जी नहीं होगी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा बेटर मूड रहेगा स्ट्रेस अच्छा रहेगा. सो लाइक साफ सफाई तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिर वो बॉडी की हो फेस की हो या फिर लाइक इन्वायरमेंट की हो दैट इज वेरी ट्रू आई मीन लाइक इवन आई डोंट फील लाइक 100% एनर्जेटिक इफ माई इन्वायरमेंट इज डर्टी राइट. सो या जब सेल करना है तो गंदा रहने दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है. सो नाउ बिल्ड अ हेल्दी किचन. ओके जो मैंने फर्स्ट पैरा में बोला आपको वही आपको सेकेंड थर्ड पैरा में बता रही हूँ कि आपको एक हेल्दी किचन तो मतलब बिल्ड करना होगा जिसमें आप मतलब लाइक आपकी बॉडी क्या अच्छा प्रिफर करती है वो रखो आप क्वांटिटी में रखो फिर ठीक है. फिर वो फ्रूट्स हो गया वेजिटेबल्स हो गया सीजनल फ्रूट्स एग हो गया नट्स हो गया ओट्स हो गया हेल्दी स्नैक्स रखो लाइक पॉपकॉर्न आई वुड प्रिफर मुरमुरे इज फाइन राइट मतलब लो कैलोरी डाइट्स हाई कैलोरी डाइट्स अगर आप रख भी रहे हो तो आप कम क्वांटिटी में रखो. फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ आई वॉन्ट टू ईट अ भुजिया राइट और चिप्स man, I'll buy a 10 rupees chips, not 20 rupees chips. I know that I have money, but I won't buy that like 20 rupees is a big chips packet because वो अगर आप खरीदोगे तो आपको फिनिश करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी राइट. So you cannot eat what you don't have. So don't keep it in your kitchen. Okay, create a fitness corner. I mean, like you don't need a like fitness gym or something or anything like that. बट आप अपने घर में एक छोटा सा लाइक कॉर्नर रख सकते हो या कुछ इक्विपमेंट्स रख सकते हो जिसको आप देखो और आप मोटिवेट हो. समटाइम्स यू कैन like use it for strength training or stretching like yoga mat resistant band water bottle towel anything foam roller. ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी लाइक 20 minutes ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी लाइक खुद को प्रोवाइड कर पाओगे इन शॉर्ट राइट. सो लाइक बीइंग नेचर इंडोर्स लाइक आप प्लांट्स रखो अपने बेडरूम में. एक प्लांट तो रखनी चाहिए सबको आई वुड से. ओके एंड स्नेक प्लांट होता है मनी प्लांट होता है एलोवेरा होता है पीस लिली होती है तो ये सारे प्लांट है आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हो बहुत मिनिमम होता है ठीक है. मतलब लाइक अगर मान लो 2 3 4 कमरे हैं घर पे तो एक तो आप रख ही सकते हो एक एक हर रूम में है ना छोटे छोटे प्लांट्स आजकल पोट्स काफी अवेलेबल है तो वो चीज आप कर सकते हो सो दैट लाइक फ्रेश एयर रहे क्योंकि हम ऐसे विंडो वगैरह ज्यादा आजकल खोलते नहीं तो ये एक चीज आपको बेनिफिट कर सकती है. ओके and then improve your sleep environment like clean bed sheet and everything that is also important. Again whenever you are watching some content on internet for example like my content is right my content is regarding health or like lifestyle modification or anything like that तो आप ऐसे ही content और follow करो और देखो make my brain and I manipulate my brain to like perform more watch more so that I learn more and I adapt more. Okay फॉर एग्जाम्पल अगर किसी लड़की को मेकअप सीखना है तो शी गोज एंड वॉच शीज 10 Instagram reel. If a boy wants to like dress properly, he watch go and watch like 10 Instagram reel. That's how you create a personality by learning from others as well, right? So this is very important. Like whatever you're watching or listening should be in the frame of the lifestyle which you want to live, basically. Okay, so yeah. Again, reducing digital distraction is also important. आप थोड़ा barrier करो like sleep से पहले आधे घंटे पहले ना मतलब 1 घंटे पहले इफ यू हैव समवन इन लाइफ टॉक टू देम रेदर देन लाइक यूजिंग फोन लाइक अगर आप नहीं भी है कोई तो आप मेडिटेशन कर सकते हो रीडिंग कर सकते हो फैमिली से बात करो एक्सरसाइज करो स्ट्रेच करो थोड़ा एंड देन यू गो टू स्लीप राइट. नाउ एट थिंग विल बी लाइक सराउंड योरसेल्फ विद द हेल्दी पीपल जो आपको मोटिवेट करे ठीक है हेल्दी हैबिट्स क्रिएट करने में हेल्प करे ठीक है. तो आप ऐसे लोगों को कॉन्टेक्ट में हो जो मतलब लाइक हाँ दे वांट टू इम्प्रूव देमसेल्फ दे वांट टू एक्सरसाइज और दे आर एक्सरसाइजिंग राइट.
So you will be a little motivated by them also. For example, like I'm very much influenced by my sister, my father, I would say. So they do have healthy habits as well, which I try to adapt, right? So being a strong person is something like whenever आप कोई चीज देखते हो तो आप उसको मतलब अडेप्ट करो rather than उसका bad habit, right? And obviously bad things leave करना is very important. So in conclusion, start with one small challenge: clean your room, add one plant, prepare healthy meals, exercise just for 20 minutes. Okay, so these are the things which you can do. If you find this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more evidence-based health and wellness tips. And what is the one change you will make today to create a healthy environment, not for yourself only, but for the society you are living in, for that as well?